So we will be fast space studying few organs, and one of them is pancreas. Pancreas, pan means all, krias means flesh, all fleshy organ which lies inside the C-shaped loop of duodenum, which lies inside the C-shaped loop of duodenum. Pancreas has a head. It's a retroperitoneal organ. Neck, please be attentive. Body, tail, and head has a process called as uncinate process. Head has two surfaces, anterior, posterior. Head has three borders, superior, right, and inferior. Superior, right, and inferior, two surfaces, anterior and posterior. Between the pancreas and duodenum, there is superior pancreatico-duodenal artery. The superior mesenteric artery goes like this, which gives inferior pancreatico-duodenal artery. So if you ask me, what is related to the superior border? This is border, this is surfaces. First part of duodenum and superior pancreatico-duodenal artery. Barabar? Superior border of head. Inferior border of head will be related to third part of duodenum. This is first part, this is second part, this is third part, this is fourth part. And which artery, Tamanna? Inferior pancreatico-duodenal artery. And the right border is related to which part of duodenum? Second part. And the anastomosis between superior pancreatico-duodenal artery and inferior pancreatico-duodenal artery. Okay? अभिजित, तुझ्या बाजूचा मुलगा, तू एप्रन पण घातलेला नाही, तू खाली कशात बघतोयस ते मला माहिती नाही. मी इथं शिकवतोय, तू खाली काय बघतोयस? Now, some relations you need to understand that here behind is IVC like this. So head posteriorly will be related to IVC. Here will be the aorta. Here will be the aorta posterior. Anterior surface will be related to transverse mesocolon. Transverse mesocolon. ठाण्याचे कोण कोण आहेत? ठाण्याचे लोक हातवरती करा. TMC म्हणजे ठाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. पण आपल्यासाठी काय TMC? ट्रान्सवर्स मेसोकोलॉन. पोस्टिरियरली हेडच्या मागच्या सरफेसला IVC आहे. IVC posteriorly IVC, anteriorly transverse mesocolon. Now let's talk about the uncinate process. Uncinate process. Anteriorly काय आहे? Root of mesentery. Root of mesentery. Root of mesentery च्या आत काय असतं? What is there inside the root of mesentery? Yes. What is there inside the root of mesentery? Superior mesenteric vessels. Root of mesentery and superior mesenteric vessels. Uncinate process anteriorly है. Posteriorly क्या है? Uncinate process मध्ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? Aorta. So posteriorly is aorta. Now the neck of pancreas. Neck of pancreas. Neck of pancreas anteriorly is related to pylorus. मतलब pylorus ऐसा होता है जो इधर जाके first part of duodenum से continue होता है.
Neck anteriorly related to pylorus. Okay. Neck of the pancreas anteriorly related to pylorus. Posteriorly, what happens is there is splenic vein coming from here. Here is superior mesenteric vein. Together they unite to form portal vein. They form portal vein behind the neck of pancreas. So behind the neck of pancreas is portal vein formation. Portal vein formation. Portal vein formation. Okay? So let's come again. Pancreas is inside the C-shaped loop of duodenum. It has head, neck, body, tail. Tail is related to spleen. It lies in the lienorenal ligament with splenic artery. An uncinate process. Head has two surfaces. What are they? Anterior and posterior. Anterior is related to transverse colon. Posterior is related to IVC. Tanisha, there are three borders. Superior border, right border and inferior border. Superior border is related, Furpa. Superior border is related to first part of duodenum and superior pancreatic of duodenal artery. Abhishek, the inferior border is related to third part and inferior pancreatic of duodenal artery. Okay, Kalash, and right border is related to second part of duodenum and anastomosis between superior and inferior pancreatic of duodenal artery. Uncinate process anteriorly is a whole class together. Uncinate process anteriorly is related to root of mesentery containing superior mesenteric vessel and posteriorly related to aorta. Neck anteriorly, Abhijit, neck anteriorly related to pylorus, posteriorly portal vein formation. Now the body of the pancreas, which you are looking here, is actually like this, cut section. मतलब ये ऐसा है. Okay, here is anterior border, here is superior border, here is inferior border. Okay, anterior border gives attachment to Thana Municipal Corporation. What is it? Transverse mesocolon. Superior border is related to splenic artery. बरोबर कि नहीं? अपन हमने जब स्टमक बेड स्टडी किया था तभी हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था. तभी स्प्लेनिक आर्टरी टॉर्चरस स्प्लेनिक आर्टरी राइट लाइंग इन द स्टमक बेड. तो स्टमक पीछे एक्सपांड होता है, इसके लिए उसको टॉर्चरस बनाए. सो सुपीरियर बॉर्डर. inferior border of the body is related to root of mesentery. बरोबर? root of mesentery. बरोबर है कि नहीं? with superior mesenteric vessels. This surface is called as anterior surface. This surface is called as inferior surface. This surface is called as posterior surface. Anterior surface, grossly this. This is the anterior surface. ये anterior surface. This forms the stomach bed. क्या फॉर्म करता है वो? स्टमक बेड. याद आए कि आपको स्टमक बेड का डायग्राम? यहाँ पे हमने ऐसा किडनी निकाला था, यहाँ पे स्प्लीन था, यहाँ पे सुप्रारीनल था. बरोबर की नहीं? स्टमक बेड का डायग्राम. So posterior will be related to kidney. किडनी मागे असते. अजून काय? एओर्टा. अजून काय? लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्रैम. Inferior will be related to coils of jejunum and ileum. Inferior is related to coils of jejunum and ileum.
Okay, so this is clear. Again, how many borders does the body of pancreas have? Superior border related to splenic artery. Anterior border gives attachment to transverse spleen. Inferior border related to root of mesentery. Three surfaces. Anterior surface forms stomach bed. Inferior surface related to coils of jejunum and ileum. देखो यहाँ पे ऐसा ट्रांसवर्स मेसोकोलन रहेगा. Above stomach bed, नीचे jejunum ileum. And posterior surface related to aorta, kidney, suprarenal, left crus of diaphragm, renal vein, everything, renal artery, gonadal artery, सब कुछ आएगा जो भी पीछे के साइड पे. टेल ऑफ द पैंक्रियास, कम ऑन, टेल ऑफ द पैंक्रियास के लिए हमको ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Tail of the pancreas is related to hilum of spleen. There is splenic artery here. It lies in which ligament? Tail of pancreas? Lino-renal ligament. That's all. Lino-renal ligament. Tail of pancreas. Blood supply of the pancreas. Pancreas develops at the junction of foregut and midgut. Therefore, it is supplied by superior pancreatico-duodenal artery and inferior pancreatico-duodenal artery. Additionally, the splenic artery gives a branch called as arteria pancreatica magna. Arteria pancreatica magna. एक artery. Lowish, love क्या lowish? Lowish. समझे आपको? What is that artery? Arteria pancreatica magna. ओम की तरह ओम. इधर एक ओम करके लग पोजीशन. ओके, so that is blood supply of pancreas. ओम चल पटकन इकडे पुसून टाक. So now about the development of the pancreas. The pancreas develops at the junction of foregut and midgut. Pancreas is a serous gland. Parotid is also serous gland. हिस्टोलॉजिकली फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? सीरस एसिनाई है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेंट्रो एसिनार सेल्स. हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस वैसा आपको सेम ही निकालना है, बट देन हिस्टोलॉजी में एक मार्क के लिए ऐसे अंदर ये एसिनाई होते हैं पैंक्रियाज के, और पैरोटिड के एसिनाई होते हैं ऐसे एसिनाई और डक्ट. यहाँ पे क्या होता है? डक्ट के सेल्स ऐसे सेंटर में आ जाते हैं. These are called as centroacinar cells. So दोनों जगह पे there are cells. There are serous acini in parotid and pancreas. Apart from islets of Langerhans, जो pancreas में होते हैं, parotid में नहीं होते. There are centroacinar cells. They secrete bicarbonate ions. So what are centroacinar cells? Cells of the duct of the acini which appear at the center of the acinus. Centroacinar cell. They secrete bicarbonate. Now the development. हे बघा इकडे in the development this is the foregut midgut junction. There is a ventral pancreatic bud and dorsal pancreatic bud. Ventral bud and dorsal bud. Now what happens is वो दोनों घूम के rotation of gut में ऐसा होता है कि dorsal gut becomes like this and ventral gut is like this. Ventral bud, sorry. डॉर्सल बर्ड इज लाइक दिस, वेंट्रल बर्ड इज लाइक दिस. ये पहले वेंट्रल बर्ड था, डॉर्सल बर्ड था. वो गट का रोटेशन में क्या हो गया? डॉर्सल ऊपर आ गया, वेंट्रल नीचे आ गया. दोनों का अपना अपना डक्ट है. बोथ ऑफ देम हैव देयर डक्ट. देयर डक्ट्स गेट्स जॉइंट. सो द मेन पैंक्रेटिक डक्ट डेवलप्स लाइक दिस. एंड दिस इज एक्सेसरी पैंक्रेटिक डक्ट. ये एक्सेसरी पैंक्रेटिक डक्ट. ओके, सो दिस इज माइनर मेजर डिओडिनल पेपिला. दिस इज minor duodenal papilla. So let us list the structures developing from the dorsal bud. क्या क्या है? Upper part of head, बरोबर, then neck, then body, then tail, and distal part of duct. Distal part of duct. Clear? dorsal bud से इतना डेवलप. Distal part of ventral bud से क्या डेवलप होता है?
lower part of head, then uncinate process and proximal part of duct. Proximal part of the duct, main duct of pancreas. डॉर्सल बर्ड से और क्या डेवलप होगा? चलो बोलो, नीला क्या है? एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके, एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. हमारा सीआर आया क्या आज? हाँ, ऊपर. सीआर डॉर्सल बर्ड से क्या डेवलप होता है? अपर पोर्शन ऑफ हेड, नेक. देखो ना पैंक्रियास कैसा है, ऐसा है ना. तो बेसिकली ये सब पार्ट डॉर्सल बर्ड से डेवलप होता है. क्या है? अपर पोर्शन ऑफ हेड, नेक, बॉडी, टेल. वेंट्रल बर्ड से क्या डेवलप होता है? हाँ, लोअर हेड, अनसिनेट प्रोसेस. उसके अलावा डक्ट, मेन डक्ट comes from the dorsal bud. ये इकडे तो पुसून लिया था बोल. डॉर्सल बर्ड से क्या क्या डेवलप होता है? डिस्टल पार्ट ऑफ द मेन डक्ट एंड एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. वेंट्रल से क्या डेवलप होता है? हो पूरा. वेंट्रल से क्या डेवलप होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एप्लाइड एनाटॉमी. एन्युलर पैंक्रियास. वो जो पैंक्रियास, वेंट्रल बर्ड, डॉर्सल बर्ड ऐसा नहीं होता है. वो कभी कभी क्या होता है कि अगर ये डिओडिनम है तो ये ऐसा ही उसको सराउंड कर देता है. एन्युलर पैंक्रियास एंड कॉजेस स्टेनोसिस. सो पैंक्रियास इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इन द सी शेप्ड लूप सराउंड्स द डिओडिनम. दिस इज कॉल्ड एज एन्युलर पैंक्रियास. कंजेनिटल एनोमी पहला. दूसरा क्या लिखते हैं? दूसरा पॉइंट हम लोग एप्लाइड एनाटॉमी में इन्वेस्टिगेशंस. आपको मैं मेमोरी ग्लैंड से ये बता रहा हूँ. कंजेनिटल एनोमली पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखेंगे? ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी. बाद में गूगल कर लेना आप लोग ये जो क्या है. फिर मेडिकल में क्या लिखोगे? डायबिटीज माइलाइटिस. बराबर है. सर्जिकल में क्या लिखोगे? सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट. सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट क्या होता है? पैंक्रियास और स्टमक के बीच में क्या है? एनीबॉडी? लेसर सेल. तो उसमें कभी कभी फ्लूइड जमता है. सो दैट इज कॉल्ड एज द सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट. उसको कैसे ट्रेन करते हैं मालूम है क्या? स्टमक को कट करते हैं, एंटीरियर वॉल, स्टमक के कैविटी में जाते हैं. पोस्टीरियर वॉल को कट किया तो वो ड्रेन हो जाती है. Because it is between stomach and pancreas. Pancreas is behind the periton. Okay, so it is between stomach and pancreas. तो stomach को हटाओ बिटाओ नहीं, stomach को कट करके उसको एक्सेस करके. Cancer of pancreas. Cancer of head of pancreas very significant. वो 3 चीज पे प्रेस कर सकता है. वहां पे बाइल डक्ट ओपन होता है सेकेंड पार्ट में. इट कैन प्रेस अपॉन द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. इट में प्रेस अपॉन द पोर्टल वेन टू कॉज ascites, और इट में प्रेस अपॉन द इंटेस्टाइन टू कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. कैंसर ऑफ पैंक्रियास में प्रेजेंट एज 3 फीचर्स. इट में प्रेस अपॉन द बाइल डक्ट टू कॉज अभिजीत ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. बाइल डक्ट को ही ब्लॉक कर दिया. It may press upon the portal vein to form ascites. Patient may come with ascites, fluid in abdomen. Or it may press upon the duodenum. Shreya, it may press upon the duodenum and present as intestinal obstruction. Cancer of head of pancreas can present in 3 ways. कोपऱ्यातला मुलगा. What are the 3 ways in which cancer of head of pancreas presents? It may press upon bile duct and cause obstructive jaundice. It can press upon portal vein and cause ascites. It can press upon the duodenum and cause
intestinal obstruction. Okay, thank you. So that is all about pancreas.